Good morning, students of class 4. Students, those who have Wordsworth English Reader books, please take out your books. Today, I'll be continuing with Wordsworth English Reader. Please turn to page number 28. Lesson 4, Why Do Bees Buzz? I'll be continuing with lesson 4, Why Do Bees Buzz? Good morning, students of class 4. Students, today I'll be continuing with lesson 4, Why Do Bees Buzz? Students, those of you who have purchased the new edition of Wordsworth English Reader book, please take out your books and turn to page number 28. Lesson 4, Why Do Bees Buzz? Students, I have already explained the lesson to you, but now before I move further, I would once again read the lesson for you and explain it again. Students, one more very important fact about bees that we have read in this lesson, that bees are pollinators because they help in pollination. And what is pollination? The transfer of pollen from one flower to the other. And by transferring the pollens, the bees help the tree to grow new, to make seeds, and then the seeds grow into plants. And you know, plants are essential for survival of human beings, animal, birds and insects. So children, bees are not only extremely important for human beings but for the entire ecosystem to function. Like animal, birds, insects, human being, everyone depends upon plants for survival. And bees help the plants to grow. How? Because they help in pollination. They're responsible for pollination. They transfer the pollen from one flower to another, which results that the plants make seeds and later the seeds grow into new plants. Bee allows plants to make seeds through pollination. And these plants, children, they contribute to the food system by feeding animals, human beings, birds, insects. And if the food source of animals, birds, human beings, that is the plants, if they are lost or they finish, what will happen? The entire food chain will be disturbed, because 80% of the flowering plants, all the flowering plants, they depend on pollination. And you know, trees like orange, almond and apple, these trees also grow because of pollination. And who helps in pollination? Bees. So if bees do not exist, you won't be able to eat fruits like oranges, apples and dried fruits like almonds. So just imagine such a small creature, and what great things the bee does. It helps the nature. It helps the plants to make seeds by transferring the pollen. And when the plants make seeds, new plants grow, and those new plants help the human beings, animal, birds, because everybody feeds on plants. Without plants, our survival will become very difficult. So bees, they appear small, but they are very important for nature. Students, before I read the lesson once again, I would like you to understand the word meanings also. The first word is buzz. Students, buzz is the sound made by the bees, that zzz sound. This is known as buzz. Then code word is the secret
word. Code word, secret word. Then the third word is hum. That is a low continuous sound. Students, जब तक bee उड़ती रहती है, that continuous humming you can hear. Whenever a bee flies, that humming sound is constant. You can hear it continuously. And why we have read in the lesson that this is because of their, when they beat their wings, we can hear that humming sound. Then beat, beat means to move. Something you move. That is known as beat. Then our fifth word is pollinators. Animals or things that help in pollination. So bee is also a pollinator because it helps to transfer the pollen from one flower to the other. Sprouts starts to grow. When small root starts coming from a soaked seeds, that is when the seed starts to sprout. Then seventh word is lively. Lively means energetic, full of energy. Then eighth word is quivering. Quivering means shaking. Quivering means shaking. Then ninth word is godfathers. Godfathers, people who help in developing something. And students, here bees have been called godfather because they help the plants, the trees to grow new plants. Because if bees do not pollinate the flowers, what will happen? They won't be able to make seeds, and if they won't be able to make seeds, the new plant will not grow. So bees help the tree to grow new plants. So they are called the godfathers. And the new plants, they grow away from the parent plant because bees transfer the pollens from one flower to a flower who may be far away from the parent flower, isn't it? Now, 10th word is segmented. Segmented means having different parts, divided into different parts. Then 11th word is bumpy. Bumpy means uneven, not in a level. That is bumpy. Now students, I'll read the lesson and once again explain the lesson. Then I'll continue with the exercises. All of you, please turn to page number 28. Buzz. Hey, what's all that buzz about? Is it a code word used by bees to call their friends, or a hum of excitement when honey is spotted? Bees, particularly bumblebees, make a loud buzzing sound as they fly. The sound is made when the wings beat up and down. The smaller the wings, the faster the bees have to beat them in order to fly. And the quicker they beat, the louder the buzz. Bees also buzz to do something very useful. They carry pollen from one flower to the other, like postmen delivering letters. Pollen is the powdery grain on flowers. Pollen helps plants to make seeds. Bees are excellent pollinators. Thanks to them, many new plants grow and sprout all around. How do those tiny grains of pollen stick to the bees' feet? When bees sit on a flower to suck honey, the grains of pollen stick to their feet and bodies. Then, when the same bees buzz near a flower and perform a lively dance, the quivering shakes the pollen off on other flowers. The bees then fly to other flowers where they leave the pollen behind to pick up new ones, and this process continues. Bees are the buzzing godfather of many new plants that grow away from the parent tree. Can you hear your own breath? Usually not. But you can hear a bee breathing. That is because the buzz is also the sound of the bee breathing. It has a small segmented body, so when it breathes, the air gets on a roller coaster ride through all these bumpy parts inside and creates a buzz.
Sounds pretty exciting, doesn't it? Aren't those busy bee truly amazing? So, students, in this lesson, we come to know how a small creature like bee is very important for the nature. Because of bee, many new plants grow, and everyone is aware that plants are responsible for survival of human beings, animals, insects, birds. Now, students, in this we have come to know by reading this lesson that why does the bee buzz? Why do they make that sound? That buzzing sound comes out whenever we see a bee flying. We can hear that buzzing sound. Earlier, we used to think that is it a code word used by the bee, or bees, they out of excitement they make this sound when they find honey somewhere else. But students, the first reason for the buzzing sound is that the buzzing sound is made when the bees beach their wings up and down. जब भी बेटा बीज अपने विंग्स ऊपर नीचे उड़ने के लिए मूव करती है तो बजिंग साउंड निकलता है. ये फर्स्ट रीजन है बजिंग साउंड का. देयर आर थ्री रीजंस गिवन. सो द फर्स्ट रीजन इज, पहला रीजन क्या है, जब बी अपने विंग्स अप एंड डाउन करती है एंड तो बजिंग साउंड कम्स आउट. एंड द स्मॉलर द विंग्स, जितने बी के विंग्स बेटा छोटे होंगे, स्मॉल होंगे, उतना ही बी को उसको बहुत फास्ट अप एंड डाउन मूव करना होगा. बिकॉज अगर वो फास्ट मूव नहीं करेगी तो इट वोंट बी एबल टू fly. So the smaller the wings, the faster the bees have to move their wings up and down. And the faster the bees will move their wings, the louder the buzz will come. Bees जितना fast अपना wings को up and down beat करेंगी, उतना louder हमको buzzing we can hear. So that the faster the up and down of the wings, the movement of the wings, the louder the buzz will be heard. Now, bees, this was the first reason. Now, the second reason is that bees also buzz when they do something very useful. Useful for whom? For the entire nature, for human beings, for animals, for plants, for birds, for everyone. What do? They carry pollen from one flower to the other. Same way as the postman carries letter from one house to the other. That's the reason the author has compared the bees to a postman. जैसे postman letter एक घर से दूसरे घर deliver करता है, same way bees transfer pollens from one flower to the other. And why this is important, children? Because pollen is responsible for the growth of new plants. और न्यू प्लांट्स कैसे होता है, जब एक फ्लावर से, बिकॉज वी ऑल नो दैट प्लांट्स एंड ट्रीज कैन नॉट मूव, तो एक फ्लावर का पोलन है दूसरे फ्लावर का, पॉलिनेशन के लिए, सीड बनने के लिए दोनों फ्लावर्स का पोलन बेटा मिलना जरूरी है. नाउ दे कैन नॉट वॉक एंड put the pollen in other flowers. So what happens? Bees, when they sit on a flower, एक फ्लावर के ऊपर बैठती हैं. Why do they sit on a flower? To suck the nectar. What is nectar? Nectar is the sweet juice. जो फ्लावर एक स्वीट जूस रिलीज करता है, बहुत स्वीट जूस होता है जिसको बीज सक करती है. लेटर ऑन देन दे मेक हनी आउट ऑफ दैट स्वीट जूस. तो बीज जब फ्लावर पे बेटा नेक्टर सक करने के लिए बैठते हैं तो व्हाट हैपेंस, जो पाउडरी पोलन्स होते हैं वो बी के फीट में, बॉडी में वो स्टिक कर जाता है. पाउडर जैसा जो येलो पाउडर टाइप जो पोलन्स होते हैं, ग्रेन्स, माइन्यूट छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, वो बी की बॉडी में स्टिक कर जाते हैं, बी के बॉडी में, फीट में. फिर व्हाट हैपेंस, बी वहां से जब उड़ती है और दूसरे फ्लावर के ऊपर वो बस करती है, दूसरे फ्लावर पे वो बैठने से पहले इट मूव्स अराउंड, इट कीप्स ऑन फ्लाइंग ओवर द फ्लावर. तो उसकी बॉडी पूरी क्विवर करती है. क्विवर करती मीन्स शेक करती है. उस शेकिंग के प्रोसेस में भी क्या होता है, पोलन उसकी बॉडी से, जो माइन्यूट एकदम छोटे छोटे पार्टिकल से पोलन के, वो दे स्टार्ट फॉलिंग आउट फ्रॉम द बीज बॉडी
और वो जिस फ्लावर के ऊपर वो मूव करती रहती उस फ्लावर के अंदर वो जाते हैं, तो पॉलिनेशन होता है। और पॉलिनेशन क्या होता है, जब एक फ्लावर को दूसरे फ्लावर का वो पोलन मिलता है तो थोड़े दिन बाद फ्लावर जो है न्यू सीड्स बनाता है, और फिर उस न्यू सीड से थोड़े दिन में क्या होता है, नया प्लांट ग्रो करता है। एंड वो भी कैसे ग्रो करता है बेटा, वो पोलन तो किसी दूसरे फ्लावर से लाई थी, मे बी दैट वो प्लांट जिसमें वो फ्लावर लगा था मस्ट बी फार अवे, और अब वो जो सीड है वो तो दूसरी जगह आके गई, तो अब वो जो है नया प्लांट आएगा वो पेरेंट प्लांट से दूर उगेगा। एंड इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बीज रिस्पॉन्सिबल है, बीज ने पॉलिनेशन किया, दैट इज द रीजन वी कॉल बीज पॉलिनेटर्स, बिकॉज वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पोलन ट्रांसफर करते हैं। एंड जब पॉलिनेशन होता है तो जो प्लांट है वो नई सीड्स बनाता है, एंड जब सीड्स बेटा व्हेन दे मेक सीड्स लेटर ऑन स्पीड्स क्या होते हैं, स्प्राउट करते हैं। आपने देखा है ना मम्मी स्प्राउट्स ग्रांस को रात भर सोक करके रखती, देन अर्ली इन द मॉर्निंग यू सी स्मॉल रूट्स कमिंग आउट फ्रॉम द soaked seeds and then you eat and that is very good for health। तो उसी तरह से थोड़े दिन में वो seeds किससे न्यू प्लांट ग्रो करती हैं, and when new plants grow it is important for nature। and who is doing all this, bees। so bees are very important for the nature। तो bees को pollinator क्यों बोलते हैं, because they help in pollination। and what is pollination, pollination is transfer of pollens from one flower to the other। और क्या होता है फिर पॉलिनेशन, जब बीज फ्लावर में से क्या पीने बेटा बी बैठते हैं, टू suck its sweet nectar। what is nectar, nectar is the sweet juice made by the flower which bees like to suck। एंड जब बीज बैठते हैं वो पोलन उनकी बॉडी पे स्टिक कर जाते हैं, और बीज जब ओवर करते हैं फ्लावर के ऊपर तो क्या होता है बेटा, वो पोलन्स उस बी की बॉडी में से गिरते हैं, बिकॉज जब वो पंख ऐसे अपने अप एंड डाउन फास्ट बीट करते हैं तो बॉडी पूरी शेक होती है बी की, एंड उसमें से पोलन्स गिर के दूसरे फ्लावर में जाते हैं। एट टाइम्स क्या होता है, बी जब दूसरे फ्लावर में बैठते हैं तब भी उनके बॉडी से जो पोलन है वो दूसरे फ्लावर में चले जाते हैं। तो एंड देन व्हाट हैपेंस, पॉलिनेशन हैपेंस, एंड पॉलिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल for the plant to make seeds, and then the seeds they grow into new plants। so bees help in pollination। and bees बेटा बहुत सारे फ्लावर्स को पॉलिनेट करते हैं, वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाते हैं, दूसरे फ्लावर से थर्ड फ्लावर, एंड फ्रॉम थर्ड फ्लावर टू द फोर्थ फ्लावर, एंड फ्रॉम फोर्थ फ्लावर टू द फिफ्थ फ्लावर। so they keep on doing and they keep on pollinating other flowers, and as a result new plants they grow। and who's responsible, bees are responsible। so bees are also called the godfather of many new small plants which grow away far from the parent plants, because they might have bought the pollen from a plant which is far away। so bees are also called godfather। now this was the second reason कि बी जब जाते हैं फ्लावर के ऊपर नेक्टर सक करने, एंड व्हेन दे ट्रांसफर पोलन उससे पहले भी वो बहुत जोर से अपने विंग्स अप एंड डाउन करते हैं, तो दैट बजिंग साउंड आल्सो कम्स। सो दिस वाज द सेकंड रीजन कि जब पोलन्स कैरी करते हैं तब भी वो अपने विंग्स जोर से अप एंड डाउन बीट करते हैं, देन आल्सो द बजिंग साउंड्स कम। नाउ द थर्ड रीजन फॉर दैट बजिंग साउंड चिल्ड्रन इज दैट कि हम अपनी व्हेनेवर वी ब्रीथ वी हार्डली कैन हियर आवर ब्रेथ। हम जब सांस लेते हैं, एयर इनहेल और एक्सहेल करते हैं, कैन वी हियर आवर ब्रेथ, हमको अपनी सांस लेने के बाद नहीं सुनाई जाती। एट टाइम्स कभी कभी जब हम बहुत फास्ट भागते हैं या कभी हमको कोल्ड एंड कफ हो जाता है तब हमको अपना थोड़ा थोड़ा ब्रीथ सुनाई देता है, बट नॉट ऑलवेज, इजंट इट। यूजुअली जब हम रोज एयर इनहेल एक्सहेल करते वी कैन नॉट हियर आवर ब्रेथ, बट बेटा बी जब भी एयर वो इनहेल एक्सहेल करती है it makes that buzzing sound। now why bees makes a buzzing sound, because bee की body is different। bee की body is segmented मतलब different parts में divided है। आपने एक ladder देखी है, सीढ़ी में कैसे बीच बीच में segments बने होते हैं ladder में, ऐसी तरह bee की body में भी small segments होते हैं, और जब air
एंड वो लेडर की तरह स्ट्रेट तो होती नहीं है बी की बॉडी, इट इज समवेयर अप समवेयर डाउन, इजंट इट, लाइक अ रोलर कोस्टर राइड. आपने रोलर कोस्टर एक देखा है, जब आप किसी मेले में जाते हैं तो बड़े बड़े जो झूले लगते हैं रोलर कोस्टर, कभी वो ऊपर जाता है कभी वो नीचे जाता है ना. अम्यूजमेंट पार्क्स में रोलर कोस्टर राइड में यू एंजॉय एंड यू स्क्रीम व्हेन द स्विंग कम्स फ्रॉम above and suddenly it falls down. तो सेम वे बी की बॉडी में भी जब एयर मूव करती है, बिकॉज सेगमेंटेड बॉडी है एंड इट इज नॉट स्मूथ, इट इज अनइवन, समवेयर इट इज अप एंड समवेयर इट इज डाउन, कभी कहीं हॉलो है, कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है. तो व्हेन एयर मूव्स फ्रॉम द सेगमेंटेड बॉडी ऑफ द बी, then also the buzzing sound is made. So that's the reason bees buzz. So students, these were the different reason why bees buzz, why they make this buzzing sound. And all of you, you would also like to have some fun in this class when the teacher is only giving lectures and lectures and you are just listening. Now 1 minute fun time, all of you also start making buzzing sound. Come on with me, we'll make a buzzing sound. Make the buzzing sound and there'll be some relaxation for you, isn't it? And you'll enjoy. Come on, make the buzzing sound again once more. Come on, start. And now you know why the bees, they make the buzzing sound. Now students, let's start with our first exercise, comprehension. And now I'm sure everybody will be able to solve this comprehension because now you know the lesson. Now state whether the following statements are true or false. First, bees make a buzzing sound when they carry pollen. Is it a reason for bees to make a sound when they carry pollen? Yes, this is true. Bees make a buzzing sound when they carry pollen. So please write true in the first one. Bees make a buzzing sound when they carry pollen. जब बेटा bees pollen carry करते हैं and they move around a flower, they make a buzzing sound, and that is the time when the pollens, they start falling off from the bee's body. Their body is quivering, shaking, quivering, shaking. So that buzzing sound is coming from the bee's body. So bees make a buzzing sound when they carry pollen. True. Bees make a buzzing sound when they carry pollen. This is true. Bees make a buzzing sound when they carry pollen. True. Now let's look at the second one. Pollen help plants to make seeds. True, children. We have read that pollen, without pollens, plants are not able to make seeds, and those seeds, they are responsible for the growth of new plants. Because children, plants cannot move. वो तो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते. They cannot walk and run like us and animals, isn't it? So bees pollen transfer करते हैं एक फ्लावर में से दूसरे फ्लावर में. तो उससे क्या होता है? That pollen is responsible for helping the plant in making seeds. So pollen helps plants to make seeds. So this is again true. Pollen help plants to make seeds. Pollen help plants to make seeds. True. Now the third one. Pollen sticks to the wings of the bees when they suck pollen from the flowers. बेटा, क्या वो जो पोलन है बीज के विंग्स में चिपक जाता है? नहीं बेटा, जब वो जूस कभी कभी पीती है वो उनके विंग्स तो ऊपर ही रहते हैं. सो इट इज फॉल्स. जो पोलन है उनके फीट में और उनकी बॉडी में स्टिक करता है, नॉट ऑन द विंग्स. बट वो विंग्स जब जोर जोर से शेक करते हैं तो बॉडी में से पोलन, बॉडी पूरी उनकी क्विवर करती है एंड द पोलन फॉल डाउन. तो जो पोलन है उनके विंग्स में नहीं स्टिक करता है, वो कहाँ स्टिक करता है? उनके फीट में एंड बॉडी में. सो दिस विल बी फॉल्स. Pollen stick to the wings of the bees when they suck pollen from flowers. No, it sticks to their feet and body. वो wings में नहीं stick करता है बेटा,
वो कहाँ पे स्टिक करता है? उनके फीट में एंड बॉडी में. So pollen sticks to the feet and body, not on the wings. So this is a false statement. Now fourth, bees breathe through the segmented body. Bees की body segmented है. What do you mean by segmented? Segmented means divided into parts. Yes, this is true. Bees have got segmented body because that is another reason when the air moves in the bee's body, they make a buzzing sound because the body is segmented, more like a roller coaster ride, not even. It is bumpy, somewhere up and somewhere down, not even, bumpy. So bees have got segmented body. Segmented means divided into different parts, and this is a true statement. Bees ki body even nahi hai, it is segmented. So when the air moves through their segmented bodies, it is more like traveling in a roller coaster rides, and that ride is not even, it is bumpy. So that buzzing sound also comes because of this. So the statement is true. Bees breathe through the segmented body. Now fifth, bees are harmful to us. Students, bees are harmful to us? No, not at all. I know everybody is scared of bees because they sting us, and when they sting, it is extremely painful. That I know कि bee का sting बहुत painful होता है. But then bees are very important for nature and our survival. अगर बेटा bees होंगी नहीं तो 80% of the plants हैं वो खत्म हो जाएंगे. बिकॉज बी क्या करते हैं? पॉलिनेशन करते हैं, और पॉलिनेशन से प्लांट सीड बनाते हैं, और सीड से क्या होता है? न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं. एंड एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, सब कुछ किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे डिपेंडेंट है फूड के लिए. तो अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो क्या हम सर्वाइव करेंगे? और प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं? बिकॉज ऑफ बीज. बीज उनके पोलन ट्रांसफर करते हैं, जिससे पॉलिनेशन होता है, एंड पॉलिनेशन से प्लांट सीड बनाते हैं, एंड सीड से न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं. सो बीज आर बेनिफिशियल. बीज तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है. दे आर नॉट एट ऑल हार्मफुल. तो दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स. अगर बीज नहीं होंगे बेटा तो one day everything will diminish from the earth. So bees are beneficial. They are not at all harmful. So this statement is false. Now the sixth one. The smaller the wings, the slower the bees have to beat them in order to fly. Again student, this is a false statement. हमने तो पढ़ा है लेसन में कि जितने स्मॉल विंग्स होंगे उतना बी को उनको क्या करना होगा? क्विकर उनको बीट करना होगा. जितने स्मॉल विंग्स उतना क्विकर फास्ट मूवमेंट, एल्स दे वोंट बी एबल टू फ्लाई. द स्मॉलर द विंग्स द क्विकर द मूवमेंट. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. द स्मॉलर द विंग्स द क्विकर द बीज हैव टू beat them in order to fly. और यहाँ पे तो quicker की जगह बेटा slower लिखा है. So this is a false statement. I hope students now the exercise A of comprehension is clear to you. Students, please read this lesson. I have posted the PDF copy in the WhatsApp group. Those who didn't purchase the book till now, please read the PDF copy from your WhatsApp group. Students, please write the word meanings of lesson 4 in your English notebooks. And what is the name of your lesson 4? Why do bees buzz? And now you come to know the reason why do bees make a buzzing sound when they fly. How many reasons we have read in the lesson? 3 reasons. I hope everybody will remember this. Now you have got the answer for why do bees buzz. Children, please complete the new words in your English notebook. New words and comprehension exercise A. State whether the following statements are true or false. And in our next class, children, we will be doing exercise B. That is, answer the following question. And children, please remember that bees, they are
They appear very small, but they are extremely beneficial for the survival of human beings, animals, birds, insects. They are extremely important for the entire ecosystem depends upon them, because bees help the plants to make seeds, and those seeds they grow into new plants, which is important for the survival of humans, animals, birds, insects. And if plants are not there, what will happen? Our source of food will be finished. So what will happen? Ultimately, it will be the destruction of the animals, plants, and sorry, animal, birds, and all human beings, because we all depends on plants for our food. So plants are necessary for our survival. So bees, they help the plants to make seeds and grow into new plants. So bees are very, very beneficial for the entire living beings and the environment.